Rahim. Assalamu alaikum. This is Exploring the Concepts with Ma'am Shazia. And once again, I'm here with ninth Biology SSC-I. And my today's topic is from chapter number 4, Cells and Tissues. So we are at plant tissues, simple tissues we are discussing these days. Simple tissues, regarding simple tissues, we have discussed one type of tissue, and that is meristematic tissue. And today I'm going to discuss the next type, which is the permanent tissues, right? But before starting the topic, the objectives of this lesson, I mean, what we want to learn by the end of this lesson, what the concepts we have to grasp during the concepts are number one is how would you define a permanent tissue? Then, what is the importance of epidermal cells to the plants? How would you identify a parenchyma cells? What is the mesophyll cell? What is a mesophyll cell? Where it is located? And name different types of mesophyll tissues. So these are the concepts which we are going to learn in this lesson, and I am trying hard to keep you make these topics easy for you people. And then let's just start with the types of plant tissues. So plant tissues are of two types, simple and complex. And then as far as simple are concerned, simple once again is divided into two types, meristematic and permanent. Meristematic tissues we have already done with these tissues, apical meristems and lateral meristem. And one type, another type of meristem is there, which is called as intercalary. And as far as permanent tissues are concerned, so these two, epidermal and ground tissues, would be discussed. I'm going to discuss in this lesson today. We will discuss these two types of tissues, epidermal and ground. And the support tissue of the permanent, which it is two, is of the permanent nature, but I will discuss in the next lesson. It has two types, collenchyma cells and sclerenchyma cells. And we have left with complex tissues, and complex tissues are only two types, xylem and phloem in our book. So we will discuss at the end. These two tissues will be discussing in the end. And the permanent tissues, so let's just start with the details of the permanent tissue. Look at this diagram. This is, I'm hoping that you should know what it is. It is a root tip, right? This is the root cap, and this is the meristematic region, right? Root cap and meristematic region. Over on this region, there are meristematic tissues, which these are the cells which are rapidly dividing cells, and these cells, that these cells are comparatively smaller in size because they didn't get time to get mature, and but they are keep on dividing, ठीक है ना? And then these cells will obviously, यहाँ ढेर तो नहीं लगेगा, वो ढेर मूव करता जाएगा आगे, and these cells will move up, right? And they will go in this zone, which is called as zone of elongation. Now it means that these cells are originating from these type of cells. These are meristematic cells. It means all plant cells are originating and are formed in meristem. ऐसे ही हुआ ना, सारे cells यहाँ से meristem से बनकर ऊपर आते गए, and these cells are called as, and now they are in the zone of elongation. First of all, characteristics. So I'm going to tell you the permanent tissues characteristics. So first of all, these tissues originate from the meristematic tissues, and these tissues do not have the ability to divide. याद रखिएगा, this is the ability of the characteristic of the meristematic tissue, that they can divide, right? These cells, permanent tissues, they are unable to divide any further. Exceptions are there. Obviously, exceptions are there. Okay. Next is these tissues do not have the ability to divide. Okay. First cells of plants. Now, which are the first cells of the plants? Obviously, meristematic tissues. And these meristematic tissues will give rise to the permanent tissues. Okay. So, ये वाला region हो गया meristematic tissues का, and that region would be of permanent tissues, right? So, ये जो flow chart बना हुआ है, you can make it on your books as well for easy recalling of the topic, that what are the characteristic of the permanent tissues. These are the descendants of the from the meristematic tissues. Meristematic tissues, which are the very first cells of the plant cells, and they permanent will originate from the meristem. Now, types of permanent tissues. So types of permanent tissue, these are the permanent tissues
I'm going to discuss a little later. So, first of all, I'm going to tell you the types of the permanent tissues. So, there are three main types: epidermal, ground, and support. Epidermal tissues, ground tissues, and support tissues. ठीक हो गया? ये तीन तरह के इसकी सेल की टाइप्स हैं. ठीक है, मेरे साथ हैं सारे. So, let's discuss the permanent tissue. सॉरी, मैं आपको ये परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू से बताना चाह रही थी. परमानेंट टिश्यू कि लुक एट दीज सेल्स, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस. ठीक है, अगर अब अपने याद करनी है ये बात, कि वो आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल था वो छोटे सेल्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्मॉल सेल्स. सेकेंडली दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस एंड दे हैव small vacuoles, and their vacuole is not central, and there are no intercellular spaces. These cells are compactly arranged, both closely packed थे वो cells, उनके दरमियान में spaces नहीं थी. याद आ रही है ये बात? So उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये सेल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. द न्यूक्लियस इज एट द एंड ऑफ द ऑन वन साइड ऑफ द सेल. देन देयर आर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स विच इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर स्पेस. ठीक है ना, यानी कि इसके दरमियान में स्पेसिस भी हैं, न्यूक्लियस साइड पर भी है, वैक्यूल सेंट्रल भी है, वैक्यूल बिग भी है. सो दीज आर द नॉर्मल प्लांट सेल्स. एज दे डू नॉट हैव टू डिवाइड, दे हैव टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शनिंग. ओके, सो ये तो थी थोड़ी सी परमानेंट टिश्यू की बातें. अब उसमें सबसे पहला टिश्यू आ रहा था हमारा एपिडर्मल टिश्यू. ओके, नाउ लुक एट दिस सेल्स. पहली बात तो आप ये देखो कि दी सेल्स आर रेक्टेंगुलर सेल्स. ठीक है ना, तो जहाँ भी आप ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स देख लो, आप समझ जाओ दीज आर द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब जो हमारे परमानेंट टिश्यूज बन रहे हैं मेरिस्टम से बन रहे हैं, तो एक तरह के तो नहीं है ना, हर तरह के हैं. कोई प्रोटेक्टिव इन नेचर हैं, कोई खाना पहुंचा रहे हैं, कोई पानी पहुंचा रहे हैं, कोई खाना स्टोर कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं. तो मुख्तलिफ काम है. हम उनमें सबसे पहली टाइप देख रहे हैं, कौन सी? एपिडर्मल. डर्मल का मतलब होता है स्किन, एपी का मतलब होता है ऊपर, स्किन के ऊपर. ठीक है ना, तो दीज आर द सेल्स that are going to separate the plants internal cells of the plant from the atmosphere. ठीक है ना, तो ये सबसे बाहर वाले सेल्स हैं, याद रखना. और ये रेक्टेंगुलर होते हैं. इनकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द इनर सेल्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, सो अब आपने एक और फिगर दिखाती हूँ आपको. इस फिगर में देखो, लुक एट दिस फिगर. दी दैट होल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, ये देखो यहाँ से कट करके दिखा रहे हैं ना आपको क्रॉस सेक्शन. So that green line and that then this green ring is both of them. आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों ग्रीन कलर के हैं, दोनों रेक्टेंगुलर सेल्स से बने हुए हैं. इट मीन्स कि ये कौन से होंगे? ये एपिडर्मिस होंगे. ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस कहलाती है डर्मिस से, ये एंडो कहला रही है. ठीक है, पर ये याद रखना कि इनका काम प्रोटेक्शन ही होता है. इस केस में हाँ, मुख्तलिफ जगहों पे डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्वियसली द लोकेशन दे हैव, ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड कर रहा है उनका फंक्शन, लेकिन मेजरली शेप और फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है इनका. तो आउटर मोस्ट सेल्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस होते हैं. ओके, now these are rectangular cells. अब ये बात बुक में नहीं है, प्लीज नोट दैट लाइन इन योर बुक, क्योंकि शेप नहीं मेंशन थी. एंड देन मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, मैंने बता दिया आपको कि ये आउटर लेयर है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, composed of single layer of cells. अब ये भी देख लिया आपने, over here we have a single layer of cell, and in that case too we have a single layer of cell and cover the plant body and acting as a barrier between environment and internal plant tissues. And I have told you that these are the cells which are responsible to protect the mm, inner cells of the plant from the environment. So they are making a insulating layer between the plant tissue and the atmosphere and the environment. तो ये तो थे हमारे पास इंट्रोडक्शन था एपिडर्मल टिश्यूज का. अब मैं आपको एक फिगर दिखाने लगी हूँ, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. ध्यान से देखना है, यहाँ मैं काफ़ी बातें बता दूंगी जो आगे काफ़ी टॉपिक को कवर कर जाएगी. ठीक है, अब इसमें से ये जो ग्रे कलर की लाइन है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सी है? वेरी गुड, दिस इज द रेक्टेंगुलर सेल्स, दीज आर द एपिडर्मिस. ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये भी एपिडर्मल सेल्स हैं. अब पत्ता जो है आपने नोटिस किया है कि एक साइड से शाइनी है और दूसरी साइड से रफ है. तो जिस साइड से शाइनी है वो उसकी अपर एपिडर्मिस है. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स हैं. और जिस साइड से वो रफ सा लगता है, बिकॉज
ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। चूंकि वहाँ स्टोमेटा है और उसके ऊपर वो वैक्सी लेयर नहीं चढ़ाई जा सकती थी, तो या वो डिसकंटिन्यूड होती है, तो इसलिए ये जगह आपको थोड़ी सी जो लोअर साइड होती है लीफ की वो हमें रफ नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, अब हमने अपर एपिडर्मिस भी देख ली और हमने लोअर एपिडर्मिस भी देख ली। नाउ दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक rectangular cells. There are certain other shape of cell, elongated से कुछ cells हैं, and these cells are basically called are green in color, and these are called as palisade mesophyll cells. ये भी ground tissue, I mean ये भी permanent tissues की टाइप है। ठीक है ना। और ये इनका क्या नाम है, पेलिसेड मीजोफिल। ये खाना बनाते हैं, ग्रीन कलर के, इट मींस दे आर फिल्ड विद द क्लोरोप्लास्ट, एंड दीज सेल्स व्हिच आर circular spherical in shape, these two, and they have, acha, what is the difference between these two green cells? These have, these elongated cells, they do not have intercellular spaces between them, right, while these cells have a bigger spaces between them, air spaces। ठीक हो गया ना, इसलिए दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जी मीजोफिल। नाउ व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड मीजोफिल? एज दे आर filled with the chloroplast, green in color, so they are called as fill. Meso means middle, in the mid of the upper epidermis and the lower epidermis, the whole of the sleeve is filled with the epidermis। और पत्ता कितना पतला होता है ना, कितना thin और flat है, and all these things are present inside that leaf, that thin leaf। Strange, isn't it? Is strange? Because this is what is called as nature। Allah has created all these things। ये फिगर मैंने क्लास में भी बनाई हुई है जब हम डिस्कस कर रहे थे वो ऑस्मोसिस, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिस्कस कर रहे थे। तो दीज आर द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा आपको नजर भी आ रहा है, ये गार्ड सेल्स इसकी दोनों साइड्स पर। अच्छा, अब ये जाइलम और फ्लोएम है, जिसको खाना पहुंचाते हैं और पानी पहुंचाते हैं, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने इस फिगर में कुछ बातें डिस्कस कर दी हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस ऊपर से शाइनी होती है, क्योंकि ये एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है क्यूटिकल, ये थिक सी एक लेयर ऊपर पर प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट द प्लांट, और ताकि उसमें से पानी बाहर ना निकल जाए, उसको इंसुलेट करती है ये लेयर। ठीक है। देन वी हैव डिस्कस द पैलिसेड मेसोफिल सेल, वी हैव डिस्कस स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आके इस स्पेस में रुकती है, यहाँ से इस सेल से ऑक्सीजन, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एंड देन दीज ऑक्सीजन will retain for some time in these spaces, and then it will move out through these stomata। This is the outer epidermis and this is inner lower epidermis, या बस लोअर एपिडर्मिस ही कहते हैं, इनर नहीं कहते, सॉरी। और क्यूटिकल भी होती है कहीं कहीं जहाँ भी पॉसिबल हो पाए, एंड वी कैन सी द एयर स्पेसिस एज वेल। I have another figure of the same structure, but a pretty easy and pretty easy to draw, by the way. So that red colored line indicating the cuticle, then is the rectangular cells, once again the upper epidermis, and the rectangular cells on the lower side of the leaf. But these leaves have stomata. This is the difference between the upper and lower. Upper layer has a continued layer of cuticle, while lower layer have discontinued layer of cuticle because of the presence of these holes. These holes are called as stomata. And then these elongated cells, which have no intercellular spaces between them, is called as palisade mesophyll or parenchyma, or these cells which are called as which are circular and green color, and they have spaces in between them, they are called as spongy mesophyll cells। ठीक है, ये एक सिंपल डायग्राम थी और ये एक्चुअल डायग्राम थी। ठीक है ना। अच्छा, एपिडर्मल सेल्स की फर्दर बात करनी है हमने। अब ये एपिडर्मल सेल्स आपने देखे थे लीफ पर, अभी लीफ पे थे तो उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं थी, बट एज फार एज रूट्स आर कंसर्न, रूट्स हैव रूट हेयर्स। एंड व्हाट आर रूट हेयर्स? रूट हेयर्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल। इस एपिडर्मल सेल की ये जो एक्सटेंड लंबी सी दुम नजर आ रही है, दीज आर एक्चुअली द रूट हेयर। रूट हेयर्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये नजर नहीं आते। ठीक है ना। आपको जो आप कहते हो गाजर पे वो जो रूट्स नजर आ रही हो शायद रूट हेयर्स, नो, दीज आर ट्रू रूट्स, राइट। वो गाजर पे जो होती है वो ट्रू रूट्स होती हैं, वो रूट हेयर्स नहीं होते। रूट हेयर्स तो माइक्रोस्कोपिक हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल सेल्स। ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, रूट को आप दिमाग में लेके आओ ना, गोल सी रूट है, देखो ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ये रूट का क्रॉस सेक्शन। जैसे गाजर ली, गाजर को कट के तो गोल सी आई ना आपके पास, वो उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ये वही क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो आउटर मोस्ट सेल पे एपिडर्मल सेल्स हैं। अच्छा,
एक ये पे एक और आ गया एपिडर्मल सेल, वही एपिडर्मल सेल की निशानी है दैट दीज आर रेक्टेंगुलर एंड आउटर मोस्ट एज वेल। सो ये देख लो, इसके बाहर से ये रूट निकल रहा है, ये रूट हेयर है, ये ग्रो कर रहा है अभी, ये भी स्टार्ट किया है ग्रोथ, और ये ग्रो फुली ग्रोन रूट हेयर है, ठीक है। अच्छा, फिर आई हैव अ सिंगल सेल विद एपिडर्मल रूट हेयर। तो ये आपका एक एपिडर्मल सेल है, इसको किताब पे ड्रॉ भी कर लो तो तुम्हें आसानी रहेगी। ओके जी, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट में लिखा हुआ है इन रूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एपिडर्मल टिश्यूज जो प्रेजेंट है, अगर रूट्स में प्रेजेंट है तो एपिडर्मल से ही पानी अंदर जा रहा है, प्रोटेक्शन भी जा कर रहा है वो, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी इज फ्रॉम द एपिडर्मल cells, and specialized structures perform specialized functions. For examples, root hairs and stomata. And you know, stomata जो थे इसके, these are also present in the lower epidermis of the leaf, and they have a very specific function that they are allowed, they open throughout the day and they will close at night, because there is no exchange of gases at night, and while the process of photosynthesis will going on during the day, and this stomata should be open for the exchange of gases. Plant is going to produce oxygen, this we have to release from the leaves through stomata, and plant needs carbon dioxide for the process of photosynthesis, and they will take in from the this stomal opening. So these are the epidermal tissues which are present in on the epidermis of the leaf. The epidermis is actually rectangular cells and present on the outer side, and they are protective in nature. The next epidermal cell tissues का एक और टास्क आ गया हमारे पास। इन स्टेम एंड लीव्स, अभी हमने लीफ में देखा था और हमने देखा रूट में। नाउ स्टेम, स्टेम पे भी और लीव्स में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ क्यूटिन विच प्रिवेंट्स एवेपोरेशन। अब क्यूटिन तो मैं बता चुकी हूँ आपको थोड़ा सा, क्यूटिन क्या, क्यूटिकल क्या चीज़ थी? क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर दैट इज प्रेजेंट अराउंड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, उसे प्रोटेक्ट भी करिए, इंसुलेट भी करिए टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन इज फ्रॉम द इवेपोरेटिव लॉस, कि प्लांट के सेल्स में से पानी सारा इवेपोरेट ना हो जाए, तो इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट। आपने देखा फ्रूट्स में सेब के ऊपर पानी डालो तो क्या अंदर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ क्यूटिन, a fatty material which is collectively it is called as cuticle. The layer of cutin is called as cuticle. एक और फिगर है, यहाँ पे आपको क्यूटिकल बड़ी नज़र आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, ये क्यूटिकल है, एंड दैट इज अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी एंड एयर स्पेसेस, लोअर एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल एंड स्टोमेटल ओपनिंग एज वेल। क्यूटिन क्या चीज़ है जी? क्यूटिन एंड वैक्सेस आर फैटी सब्सटेंसेस, दिस इज जस्ट द साइड इंफॉर्मेशन, ओके। Cutin and waxes are the fatty substances deposited in the wall of epidermal cells, forming a waterproof outer layer called the cuticle. Waterproof outer layer. I just have told you कि apple के ऊपर आप पानी डालते जाओ तो it is not going to enter inside the apple, and same is the case with the leaves. If you put some water on the leaf, obviously it will not going to enter inside the leaf from this portal. वो leaf से पानी पत्ते में नहीं जाता, वो रूट से ही जाता है, बिकॉज क्यूटिकल इज प्रेजेंट, वैक्सी क्यूटिकल, वैक्स या फैट की बनी हुई, ऑयल जिसका कह सकते हो आप, उसकी बनी हुई है, तो इसलिए पानी उसमें से नहीं गुजरता। सिक्रीट अ वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन दैट फॉर्म्स क्यूटिकल impermeable to water. That is all about the epidermal tissues. I'm hoping कि epidermal tissues के बारे में काफ़ी बातें हमें समझ आ गई हैं, that there are of different types depending, and they have a different task as well depending upon their location. अगर तो वो क्यूटिन लीव स्टेम और लीव्स पर है तो क्यूटिन की फॉर्म में भी है, अगर वो एपिडर्मल लीव्स अपर और लोअर की बात करें तो प्रोटेक्शन भी कर रही है, रूट्स की बात करें तो प्रोटेक्शन भी कर रही है, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी कर रही है। ओके, देन द ग्राउंड टिश्यूज, पैरेन्काइमा सेल्स। अब ग्राउंड टिश्यूज पे आए तो ये ट्रू पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स बने हुए, पैरेन्काइमा सेल्स मैंने आपको पहले भी दिखाए, बिकॉज ऑल ऑफ द परमानेंट टिश्यूज आर बेसिकली द पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। इन सब का नाम पैरेन्काइमा होता है, कॉर्टेक्स भी कहते हैं। बेसिकली इनका काम होता है खाना जमा करना, और खाना और पानी स्टोरेज एंड प्रोडक्शन एज वेल, तो इनकी ये ड्यूटी होती है। सो आपने देखा कि ये एक तो फ्लैट सर्फेसेस हैं जहाँ से अटैच्ड हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर, न्यूक्लियस इज ऑन द साइड, वैक्यूल आर बिगर, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी पैरेन्काइमा की। यहाँ देखो जी पैरेन्काइमा,
Intercellular spaces means they have the spaces between the cells, large vacuole to store the water and food, and they have the nucleus is on the one side, and there are intercellular air spaces. So ये तो थी हमारी पेरेन्काइमा की निशानियाँ. So made up of parenchyma, most abundant in the plant, abundant cells in plants. पेरेन्काइमा सेल्स प्लांट में सबसे ज्यादा आएंगे, याद रखें. सारा ग्राउंड टिश्यू. अच्छा, हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक जगह ग्राउंड होती है ना, एक जगह होता है जहाँ पे हम सब बच्चे खेलते हैं, वो जगह कहलाती है ग्राउंड. ठीक है. Now why that region, that area is called as ground? Because this is the area जिसमें हम भी हैं, फुटबॉल भी है, बेंचेस भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, बर्ड्स भी हैं. तो चूंकि दैट इज द रीजन that has keep all of the things in their places. तो चूंकि हर चीज उसके ऊपर प्रेजेंट होती है तो वो ग्राउंड होता बना होता है ना, ग्राउंड के ऊपर सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर द सेल्स आर कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि इसके भी ये सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं. मैक्सिमम ऑफ द सेल्स, यानी कि जितना भी खाली एरिया भरा हुआ है ना, वो सब इन सेल पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ है. तो इन पेरेन्काइमा सेल्स को आप ग्राउंड टिश्यूज भी कह सकते हो, क्योंकि वट एवर द स्पेस इज एम्प्टी, यानी कि कहीं जाइलम होगा, कहीं फ्लोइम होगा, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू है ना. एपिडर्मल है, अपना काम कर रहा है. जाइलम है, अपना काम कर रहा है. फ्लोइम अपना काम कर रहा है. अब एपिडर्मल और जाइलम के दरमियान में जो स्पेस है, वहाँ क्या डालें? वहाँ हमने पेरेन्काइमा सेल डाल दिया. दैट इज वाई दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ground tissue. They are providing the space for the various metabolic activities to be going on. So made up of parenchyma cells, most abundant cells in plants. Spherical, गोल हैं, बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. आपने नोटिस किया कि हैं गोल ही, लेकिन जहां से दो सेल्स जुड़े हुए होते हैं, दी सेल्स दे गेट फ्लैटेंड, यानी कि तब वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, गोल नहीं रहते. ठीक है ना. सो spherical but flat at the point of contact, thin primary walls, and have large vacuoles for storage of food. मैंने आपको बताया कि इनका काम भी क्या होता है. इनका काम होता ही ये है कि एक्स्ट्रा वाटर और फूड को स्टोर करें. ये एक फिगर हमें नज़र आ रही है, ये रेक्टेंगुलर सेल एपिडर्मिस, ये भी रेक्टेंगुलर सेल एपिडर्मिस, ये स्टोमेटा नज़र आ रहा है. ये पहली सीड है, या ये जो सेल्स हैं ना, ये वाले, ये सारे पेरेन्काइमा सेल्स हैं. ठीक है. ये वाले सेल्स जो हैं ये ग्राउंड टिश्यूज से कहलाते हैं. ये पेरेन्काइमा, ये भी पेरेन्काइमा. मैं पढ़ा तो चुकी हूँ आपको, मगर अब मैं इस फिगर में दिखाती हूँ आपको. ये cuticle upper epidermis, palisade mesophyll, spongy mesophyll, lower epidermis, फिर क्यूटिकल, स्टोमेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं. ग्राउंड टिश्यूज नाउ इन एज फार एज लीव्स आर कंसर्न. अब जो लीव्स में ग्राउंड टिश्यूज हैं उनका नाम है मेसोफिल सेल्स. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ. मेसोफिल सेल्स आर फाउंड प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर. ये वाले जो ग्रीन सेल्स हैं, दीज आर मेसोफिल सेल्स. दीज आर टू मेसोफिल सेल्स, दीज आर पैलिसेड, दीज आर स्पॉन्जी. ये दोनों लेयर्स मेसोफिल कहलाती हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, and they are filled with the chloroplast cells. Chloroplast organelle or chloroplast is filled with the chlorophyll. So that's why they are called as mesophyll cells. Okay. So these are found present, which have present between the upper and lower epidermis, and they are having abundant chloroplast in them, and they are responsible for photosynthesis. Obviously, as they are green, being green, they are responsible for photosynthesis and cytorespiration and protein synthesis. और इन्हीं सेल्स या इन्हीं तरह के बाकी सेल्स के अंदर चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी हैं, तो ये सारे काम इन्हीं की जिम्मेदारी है. ठीक है ना. मेसोफिल, ग्राउंड टिश्यूज बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. टेक्स्ट में भी लिख दिया है यहाँ पे मैंने. टू टाइप्स हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा मेसोफिल, लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर. ठीक हो गया ना. स्पॉन्जी, लॉट्स ऑफ एयर स्पेसेस एंड नियर स्टोमेटा. ठीक हो गया ना. स्पॉन्ज का मतलब ये होता है कि सुराख सुराख. ठीक है. तो ये हमें, आई एम होपिंग कि आपको मेसोफिल क्लियर हो गया कि मेसोफिल की लोकेशन और वो सब कुछ हमें क्लियर हो गया. ये फिगर में दोबारा इसलिए रखी है ताकि बता दूं कि ये मैंने बताया था आपको, पहले सेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल. यहाँ पे एयर स्पेसेस हैं फॉर द ईज ऑफ द प्रोसेस. पहले सेड है, रेक्टेंगुलर है, ग्रीन है, एंड दे आर द साइट फॉर द
photosynthesis for the respiration and the protein synthesis. एक और फिगर थी इसमें आपको मालूम ही है ये वाली, and I have discussed the whole figure in the last in the last slide. So plant tissues में simple कर लिए, complex कर लिए हमने, meristematic, permanent. ओके, ये दोबारा वो रिपीट हुई है. ओके, ये वाली फिगर मैंने बताया कि अब हम इस फिगर को देख रहे हैं. अभी देखते हैं इसमें से हम कौन सा पार्ट कर चुके हैं. सिंपल कर लिया, कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देख ली, मेरिस्टेमेटिक की देख ली, परमानेंट की डेफिनेशन देख ली, एपिकल बायलैटरल की देख ली, एंड देन एपिडर्मल देख लिया और ग्राउंड देख लिया, है ना. और सपोर्ट आ तो गया है क्योंकि वो परमानेंट की पार्ट का टाइप है, लेकिन मैंने यहाँ लाइन अभी नहीं ड्रॉ की. क्यों? क्योंकि अभी हमने ये लाइन, अभी चूंकि हमने सपोर्ट टिश्यू डिस्कस नहीं किए, अभी मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन डिस्कस किया है जो ये वाला था. यानी कि अप टिल नाउ हम इतना पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं. हम ये मेरिस्टेमेटिक डिस्कस कर चुके हैं, हम ये परमानेंट डिस्कस कर चुके हैं. परमानेंट में एपिडर्मल और ग्राउंड हमने किया है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया. ठीक है ना. हमने ये सारा पोर्शन हम वी हैव फिनिश्ड विद द types of plant tissues. So in the next lecture I will finish the whole of the plant tissues. Now objectives of this lesson, अब देखते हैं कि क्या आपको पता चल गया है कि परमानेंट टिश्यूज कौन से वाले हैं. तो परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि ओरिजिनेट हुए हैं मेरिस्टेमेटिक से, और वो ऐसे काम कर रहे हैं ज़्यादातर फूड स्टोरेज, फूड फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन. ठीक है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स? एपिडर्मल सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. प्रोटेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, और क्यूटिन सिक्रीशंस भी करता है वो. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ पैरेन्काइमा सेल्स? पैरेन्काइमा सेल्स को कैसे पहचानोगे? उनका लार्ज सेल्स होते हैं, सेंट्रली वैक्यूल, एंड न्यूक्लियस वुड बी एट द साइड, एंड देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द cells. Where is a mesophyll cell? Where it is located? Mesophyll cells are the cells which are present between the upper and the lower epidermis, and um, they are in the mid, as in the mid. That is why they are called as meso, and it is filled with the chloroplast. That's why they are called as mesophyll cells. And name different types of mesophyll tissues: palisade mesophyll and spongy mesophyll. So I'm hoping कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद भी आ गए होंगे. कोई बात समझ में नहीं आई तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू. यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. You can questions would be in the comment box. You can write me. You can ask me at any time. We'll meet again in the next lecture, inshallah. Up till then, please take care, and bye bye. Allah Hafiz.